Good morning, friends, and welcome to Ashok Leyland presents Trans India Real People, Real Emotions, powered by Safexpress. We are delighted to bring this exclusive and very special episode on GST. As we all know, GST Council is going to be making some major announcement in the next couple of days. And the transport industry, as well as the automobile industry, is waiting anxiously to see what's in store for them. Until now, GST was split into 4 slabs, but we are hearing that the government may downsize it to just 2 slabs, which is 5% and 18%. Now, where does that leave the transport industry and trucks? Until now, trucks were categorized into the topmost tax bracket of 28%, which is primarily for luxury or sin goods. We have always been questioning the rationale between putting trucks in the 28% segment. A truck is no luxury good, and at the same time, it is no sin good either. A truck is used for nation building, it provides livelihood to crores of people, and at the same time, it makes sure that every household, every industry in India is served. So why the 28% bracket? But having said that, we hope that trucks will now be brought under the 18% segment, unless of course the government still thinks that trucks are a luxury or sin goods and they put it in the 40%. The 40% segment is another slab that may be there for select items, luxury and sin goods again. In the current GST regime, the transport industry has been put into 2 segments, the RCM and the FCM segment. Now, what exactly are these? We spoke to a few people outside the transport industry and they were not aware. So let me quickly tell you what RCM and FCM is all about. RCM is known as the reverse charge mechanism. Under this, a transporter or a trucker pays 28% for all his purchases, which includes trucks, tires, spare parts, insurance, servicing, everything else. He collects 5% from the customer and pays his GST. However, the difference is he does not get any input credit. There is no input credit for transporters or truckers registered under the reverse charge mechanism. In the forward charge mechanism, however, the transporter pays 28% GST on all his purchases. He charges the customer 12% GST and he has the privilege of taking input credit for all his purchases. While these 2 systems started off well, gradually people started picking holes in these systems. There was disparity and the industry felt that this was harming the operations on the whole. The transporters who were claiming input credit had a cost advantage in their operating cost. But what was happening is that instead of keeping it to themselves, they were using it as a tool for competition. They were passing on the benefits to the customers, which created disparity in the industry. For the last few weeks or probably a couple of months, the industry has been having meetings and trying to come to a common ground where there is a level playing field for everyone. Now, many believe that truckers do not have the systems or the know-how of filing GST returns, maintaining the records. This has been a challenge for large transport companies also. The smallest of errors and you land up in trouble. At the same time, when you're talking of paying 12% GST, although you're collecting it from the customers, if your payments are delayed, there can be a cash flow trouble for you. So what exactly should be the way forward for the industry? What is the industry hoping for? Ideally, many feel that it should be 18% GST on trucks, 5% collected from customers, and probably no input credit. In this episode, we talk to prominent association leaders, association members, and find out what are they expecting from the GST Council and what would be the ideal situation for the road transport industry. In this episode, we have with us Malkit Singh Bal, former President AIMTC, Mr. Ashok Goyal, National President ITWA, Mr. GR Shanmugappa,
Chairman AMTC, and Mr. Suresh Khosla, President BGTA. So let's start with Mr. Malkit Singh Bal and see what exactly is he hoping to get from the GST Council. But on the other side of this very short break, you are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Safexpress. Safexpress, the leader in express distribution, redefining logistics in India. With an unparalleled reach across 31,256 pin codes, Safexpress operates 24/7, 365 days a year with the fastest network in the country, covering 2,757 direct routes. With a new route departing every 32 seconds, they ensure an average pan-India transit time of just 2.4 days. The strength of 854 gateways make first-mile connectivity and last-mile delivery seamless and swift. For middle-mile surface connectivity, 103 transshipment hubs across India ensure a smooth cargo movement and optimized transit times. For middle-mile air connectivity, Safexpress partners with leading airlines across 76 domestic airports, ensuring speed and efficiency in air logistics. With 95% plus service reliability, they don't just deliver, they ensure your cargo reaches its destination safely and on time. Stay tuned as we bring you an exciting episode powered by Safexpress, where your shipment is as safe as sold to Safexpress. चलेंगे अपने ताव में तंगलियां छोटे रास्ते अटके न किसी पड़ाव में गली हो बगल की या मीलों दूर के गांव में बेधड़क बेझिझक चलेंगे अपने ताव में चिलचिलाती धूप हो जितनी हम तो रहेंगे छांव में भारी भरकम जो भी हो ना आए किसी दबाव में सड़के चाहे जितना काटे पड़े न छाले पाँव में बड़ा दोस्त हो राहों में तो चलो अपने ताव में। Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Safexpress. We are in conversation now with Malkit Singh Bal, former President AMTC, and let's see what are his thoughts on the upcoming GST regime. Malkit ji, in a couple of days GST Council से कुछ नए reforms आने वाले हैं. There is the government has said that या तो 5% या 12 या 18% होगा, and there is a slab of 40% also. Where do you think trucks will be placed? What is your sense? देखिए, ये जो GST में जो रिफॉर्म्स आने, इट वाज वेरी लॉन्ग ड्यू, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 28, और ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की एक डिमांड रही है कि हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है गाड़ी की चेसी के ऊपर या टायर के ऊपर, उसको लग्जरी गुड्स में डाला हुआ है, यानी कि 28% में डाला हुआ है. तो इसके पहले AMTC की डेलीगेशन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से भी मिली थी. उनको भी हमने ये डिमांड रखी थी कि आप ये जो 28% है इसको आप 18 में लेके आइए. तो उनका कहना था कि इट इज़ द डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल, सो यू मीट अवर TRU टीम एंड ऑल दैट. तो रिसेंटली 2 महीने से कुछ
डेवलपमेंट में तेज़ी आई। CIBC के चेयरमैन ने हमें बुलाया और हमें GST के जो एजेंडा दिया गया था कि GST के ऊपर बात करनी है, तो हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन द करंट GST इम्प्लीमेंटेशन इन वे ऑफ द ई-वे बिल, उसमें कैसे सुधार होने चाहिए। फिर हमने सेकंड पार्ट में ये रखा कि कुछ कैटेगरी को एग्जाम्पशंस देनी चाहिए, जैसा कि एड ब्लू, रिटायरिंग ऑफ द टायर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे जो GST है एग्जाम्प्ट होने चाहिए। राइट। और थर्ड हमारी एक डिमांड थी कि जो 28% से 18% लाया जाए। और तब उनकी तरफ से काउंटर प्रपोजल या एक सजेशन आई कि 5% के स्लैब में RCM FCM में लाएं। तो फिर हमारी जॉइंट सेक्रेटरी से भी मीटिंग हुई, तो बट उनका भी कोई क्लैरिटी नहीं थी इसके ऊपर। उनका भी ये कहना था इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द GST काउंसिल, ओके, एंड वी कांट गिव यू एनी एश्योरेंस इन रिटर्न और वर्बली ऑल्सो, अच्छा, बिकॉज इट इज़ नॉट माई अथॉरिटी। अभी कुछ दिनों से वी आर सीइंग द डेवलपमेंट दैट ऑलमोस्ट द गवर्नमेंट हैज़ मेड अप देयर माइंड कि 2 स्लैब रहेंगे, एक 5% रहेगा, एक 18% रहेगा, और लग्जरी में 40% रहेगा। राइट। और सितंबर 3 और 4 को दिल्ली में GST काउंसिल की मीटिंग है। बट पर्सनली आई फील एंड फॉर द फीडबैक वी आर गेटिंग कि जो हमारा 28% जो गाड़ियों की स्लैब है टायर्स की, ये बाय डिफ़ॉल्ट 18% में आएगा। ओके। क्योंकि गाड़ी कोई लग्जरी नहीं है, टायर लगाना कोई लग्जरी नहीं है। हाँ, हो सकता है जो बड़ी हाई एंड कारें हैं, मर्सिडीज हैं, रेंज रोवर हैं, इनको 40% की लग्जरी में जाएगा। बट आई एम होपफुल दैट जो हमारी जो जितने भी हमारी जो कंपोनेंट हैं जो 28% में थे वो 18% में आएंगे। और 12 का जो FCM में बिलिंग करते थे 5% में आएगा। ओके। और 5% में देयर इज फिंगर क्रॉस्ड, 5% RCM और 5% FCM विथ इनपुट क्रेडिट भी हो सकता है। बट इट इज़ वेट एंड वॉच टिल September 3rd and 4th। Personally, currently your company is in FCM or RCM? देखिए, बहुत लंबे समय से, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो GST जब 2018 में लाया गया, तो वी हैव अवर मंथन कहिए या सेशन कहिए, ऑल इंडिया ने किया अहमदाबाद में, 2 दिन का हमारा सेशन हुआ। तो एक वैसी एक आम राय बनी कि जो सर्विस टैक्स में जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही हमारे को GST में चलना चाहिए विदाउट एनी कंप्लायंस। ओके। लेकिन कुछ जब भी आया, कुछ लोगों ने डिमांड की कि हमें FCM में जाना है। तो FCM में जाने के बाद में, जहाँ पर आपने मेरे को पूछा है कि पर्सनली मैं RCM में हूँ कि FCM में हूँ, मुझे बहुत लंबा समय लगा FCM में आने के लिए। ओके। मैंने 2-3 बरस स्टडी किए और फिर पूरा जब भी आकलन किया, स्टडी की, और देखा कि वी कैन डू द कंप्लायंस, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन इट। तो एक कंसल्टेंट हमने हायर किया, उससे हमने ओपिनियन लिया कि मेरी अगर 100 में से कितने % में RCM में मेरी कंपनी मानेंगी, कितने FCM में मानेंगी। तो लकीली 90% कंपनी जिसका हम काम करते हैं उन्होंने कहा कि आपको हम 12% अब FCM में बिलिंग करो। एक हमारी कंपनी है वो RCM में है। अच्छा। तो आज की डेट में मेरे पास दोनों रजिस्ट्रेशन है, RCM भी है, FCM भी है। और जो जिससे मैं सर्विस टैक्स GST 12% नहीं चार्ज करता हूँ, उसकी मैं RCM में रिटर्न फाइल करता हूँ, और जिनसे मैं GST चार्ज करता हूँ उसकी FCM में करता हूँ। But from a fleet owner point of view, do you think FCM is a better space to be in? You get some benefit? Definitely, as a fleet owner, कि we have understood the what benefit we are getting. Can you explain the benefits in brief? See, benefit one is when you take your vehicle in way of the 28% or 18% that input credit you will get. Right. And routine में जो आपके ऑपरेशन है, हर महीने आपको टायर लगने हैं, हर महीने आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करनी है, हर महीने आपने स्पेयर्स लेने हैं, हर महीने आपकी मेंटेनेंस है, और कई वैसे कंपोनेंट हैं जो आपने हर महीने कंज्यूम करने हैं। ऑयल है, ल्यूब में है, एड ब्लू एक हो गया, एड ब्लू हो गया, रिटायरिंग ऑफ टायर हो गया। देयर आर वेरियस कंपोनेंट जो हमारे गाड़ी को चलाने में लगते हैं एज ए फ्लीट ओनर। राइट। तो हर महीने अगर मैं एक्स अमाउंट का लेता हूँ तो उसके ऊपर 18% मिलेगा। लाख के ऊपर तो मतलब 18,000 होगा, 10 लाख के ऊपर 1,80,000 होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर GST मेरे को भरना भी पड़ रहा है
तो मैं कस्टमर से चार्ज कर रहा हूँ। अगर महीने का अगर मेरे को 20 लाख GST भरना है तो 20 लाख मेरे को तो वेरियस कस्टमर से चार्ज करके मेरी बिलिंग में आएगा, और उसके बाद जो मेरे मंथली कंज्यूमेबल्स हैं उसके ऊपर मेरे को एक्स अमाउंट मिलेगा, वाई अमाउंट मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, तो फिर भी मेरे को वो बेनिफिट है, तो ऊपर का अमाउंट मेरे को पे करना है। बट इसमें इजंट इट इम्पॉर्टेंट कि आपका जो पेमेंट साइकिल है वो मेंटेन हो? अगर आपका क्लाइंट 30 दिन के ऊपर चला जाता है तो आपको आपका जो ऑपरेटिंग फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। देखिए ये केस टू केस है, दैट थिंग यू हैव टू मैनेज, दैट थिंग यू हैव टू मैनेज व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस। राइट, आप हर एक चीज़ को मैनेज करते हैं, अपने कैश फ्लो को मैनेज करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, और ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। यू हैव टू डू योर होमवर्क, वो हिसाब से आपको करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर डिले होती है, आर यू कैपेबल ऑफ पेइंग और नॉट। आपने कभी ऐसे किया है कि कैश फ्लो मैनेज नहीं हो पा रहा है एंड GST बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ आपने ट्रक्स खरीदे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉलिसी। डू पीपल डू इट? देखो, जो लोगों ने ये किया था क्या GST मैनेज नहीं हो रहा था, उसमें उन्होंने ट्रक लेके उसको ऑफसेट करने की कोशिश की, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि दे हैव बीन लैंडेड इन द प्रॉब्लम। आज वो अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा ये पॉलिसी है कि हमें GST भरा नहीं जा रहा तो करके गाड़ियाँ डाली, दैट इज़ नॉट आवर पॉलिसी। मेरी डिमांड है तो मैं गाड़ी बनाऊंगा, मेरी रिप्लेसमेंट है तो मैं गाड़ी बनाऊंगा। Going forward, ideally from industry point of view, what should be the system for GST? देखिए, अभी जैसे सितंबर 3-4 को तो all the things will be cleared। But what would be the ideal situation, what you would expect from the council? हमारा ये है कि हमारे जो 28% का स्लैब 18 में तो आना ही है, Right. और 40% में तो जाएगा नहीं, और सेकंड 5% RCM FCM इनपुट क्रेडिट देना चाहिए सरकार ने। एक और वॉइस इंडस्ट्री की है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी, इंस्टेड ऑफ RCM FCM सिर्फ एक होना चाहिए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखो, ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं इंडस्ट्री में, हर एक लोगों का अपने अपने सोचने का तरीका होता है। हो सकता है क्या किसका ये हो, क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें जो फ्लीट ओनर है उनको एजुकेट करना चाहिए क्या वो कैसे इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। व्हाट अबाउट द ट्रकर्स? हाँ, ट्रकर्स भी ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। क्या GST का कंप्लायंस करनी है नहीं होती है? एक पान बीड़ी वाला शॉप वाला करता है, एक रेस्टोरेंट का करता है, एक ढाबे वाला करता है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वी शुड एजुकेट देम। लेकिन जो ट्रकर है, ही विल बी सप्लाइंग हिज ट्रक टू द GTA, तो वहाँ से इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा उसको? सो इसके बारे में मेरे को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आई एम होपफुल क्या उससे GTA को उसको इनपुट क्रेडिट देना चाहिए, बट आई एम नॉट हैविंग सो मच ऑफ क्लैरिटी ऑन दैट। बट जिसको भी मैं बिलिंग करता हूँ तो इनपुट क्रेडिट तो उसको पास ऑन होगा ही। वी हैव टू सी whether it is applicable or not. But if truckers come under FCM, you think it will be beneficial for them also? What I personally feel, It will be beneficial. it will personally I feel कि वो बेनिफिट ही होगा, और ये तो बहुत बड़ी एक रिलीफ होगी जो 28 का 18 आ जाएगा, वो तो of और course. 5% RCM FCM में होगा, तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेट एंड वॉच सिचुएशन टिल September 3rd and 4th, and let's our finger be crossed। You're hopeful कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा ही हो रहा है, 28 का 18 हो गया तो अच्छा ही हो गया। अच्छा ही हो रहा तो है। बाकी 5% RCM FCM होगा, दैट इज relevant for the industry, whatever the government proposes. But better for industry will be there 5% RCM, 5% FCM with input credit. Coming up after this very short break, our interaction with Ashok Goyal, President ITWA, on what he is expecting from GST. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Safexpress. India's supply chain moves at lightning speed, and Safexpress is at the heart of it all. With a fleet of 12,933 fully containerized GPS-enabled vehicles and a dense network of logistics hubs, they ensure businesses stay ahead. Whether it's the bustling metros or the remotest locations, their strategically located 86 logistics parks ensure smooth and efficient connectivity across the nation. When your shipment is booked with Safexpress, rest assured, it's as good as delivered.
आज इस बस में एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है। उनके पास एक रॉकस्टार भी बैठी है। इनके बीच एक लॉयर भी है। और एक डिजाइनर भी जा रही है, क्योंकि इस बस में सिर्फ बच्चे नहीं, इस देश का भविष्य जा रहा है और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Safexpress. We are engaging in a conversation with Mr. Ashok Goyal, President ITWA, and seeking his thoughts on how he has been through the process from RCM to FCM and what is he expecting in the future. Ashok ji, in a couple of days we are expecting some major rejig in the GST system. Do you think there is any chance that trucks could go to 40% or you think they will be at 18%? The trucks will definitely come down from 28 to 18% because this is for a common man. It is not a luxury good. So there is no chance that the GST on trucks will go from 20 to 40. But even before, trucks were always for the common man, but yet they were in the highest bracket. So does that give you a little bit of fear that maybe? Girish, 99% it is 18%. But now since you mentioned, only if the government wants to promote EV vehicles where the GST is 5% and want to reduce the price difference between an EV vehicle and diesel vehicle, they might go for 40%, but I feel it's a remote possibility that will go. Your company had been in RCM for a long time. What prompted you to shift to FCM and what were the initial challenges you faced? Basically, what people have done is GST is a very complicated subject. We took about 1.5 years just to understand the subject because we did not want to have two companies. Most of the trucking companies who are working under RCM and FCM, who are taking input credit, they have a separate company for that, and for RCM they have a separate company. We didn't want to do that. We wanted to have it in one single company. So it took us about 1.5 years just to understand whether this can be done, and we wanted to know the complete know-how, whether it is technically allowed, legally allowed. That's the reason we took a decision very late. At the same time, we are not only into trucking, we are now a complete 3PL service provider. So we do custom clearance, freight forwarding, warehousing. So it was but natural that we should have gone for FCM to take the input credit on the other verticals as well. In terms of compliances, is it very difficult? Honestly, yes. If you are running a big company, the compliances are difficult when you are having a pan-India presence, first of all. Because GST, the rules are very complicated. The billing part, for example, on the trucks, when you take a repair bill or something, it has to be, if you're under FCM, all the billing has to be in the same address where we are registered under FCM. If you do some repairs in a state where you are not registered, probably that would not be allowed as FCM. So it is complicated, and it is best that small players do not get into it because the compliance cost would be very high for them. I mean, my aim for asking this question ideally was because there is a chatter that small truckers also want to come into FCM. Will it be viable for them financially as well as, in terms of managing the books? First of all, compliance, as I mentioned, is very difficult. Number two, when you talk about small operators, they are basically subcontractors for big operators. And GTA to GTA is actually exempted. So you cannot bill under FCM. Most of the people who are now trying to get into FCM billing, the small operators basically, they are not even aware about the total rules and regulations. The chartered accountants also are not very clear about all the implications. Once the audit comes, which will definitely come after a period of 2-3 years,
there will be a lot of problem which they will face. Whatever input credit they have taken, they might have to reverse it, and ultimately I feel they will not be benefiting at all. What does ITWA stand on this issue? What does it want in terms of the reform? If I really look at the trucking industry, I would say 85% of the truckers are very small operators and who are under RCM, reverse charge mechanism. They don't take the input credit. There are just about 15% who are taking input credit. For the same kind of service, if there are two taxation structures, I don't think it is healthy for the industry per se. In my opinion, the organized players are getting more benefit than the small operators, and in the long run, the small operators will be wiped out. Hence, it is necessary that both all of the industry people are under the same tax regime, whether it is RCM or FCM, so that there is a level playing field. One more problem is those who are buying trucks, they have started calculating the profit by way of the input tax credit which they get. So the tax benefit is the profit which they have started calculating, which should not be the case. And that's the reason I feel, if you observe the last 4 or 5 years, in spite of toll going up by 1.5% every year, there is a 7% increase just in toll charges. The other costs, as you know, are also increasing. The driver salaries have also gone up. The freight rates are not moved even by a single rupee. So even though I may have made money by availing input credit, but when I'm running a vehicle, there is no profit at all. So it is not making sense that there are two tax regimes in the same kind of field which you're working. Hence, as per my as per ITWA, we feel that there should be one single tax structure. But Ashokji, as a fleet owner, you keep buying trucks every year. Don't you think you'll be missing out on a good chunk of money? Maybe not profit, but maybe as part of your business. Girish, my take is we keep on buying vehicles, but there is going to be an end to it. Once you stop buying vehicles, from the next year onwards, the entire benefits you have taken during the period when you are buying vehicles will start getting wiped off. Because once you bill under FCM, you bill 12% to the customer, you have to pay it before you receive it from the customer. It so happens that sometimes your entire payments do not come, even your tax doesn't come. So that's a bad debt. So reversing it again is a big challenge. So keeping all this in mind, I feel that in the long run, FCM may not be that beneficial what we had felt. So buying, and plus the organized players are buying vehicles to take that input credit. So right now what I feel is the supply is more than the demand. And that's the reason the freight rates are not gone up for the last 4 or 5 years. People keep on telling me that, because the fleet size has become big. I mean, the capacity has become big. The trucks are carrying 35 tons cargo rather than 20 tons cargo, and that's the reason. But I have a different opinion on that, or different perception on that. That I feel the supply has become more than the demand, and that's the reason the freight rates are not going up. Going forward, I'm talking of a really long-term solution. Does the industry need to move away from the supply-demand system of fixing freight and rather focus on your operating cost plus a profit model? Because whenever we take up this issue, they say, "Nahi, ye to supply-demand par hi chalti hai." See, very good question. How many people are aware about your operating cost? You'll be surprised. Yes. You'll be surprised that not many people are aware about the operating cost. They just go by the market rates. If X is working at X price, the other would just go and offer a 5% discount without even knowing whether that gentleman was making money or not. So I think there's a lot of education required to be given to the members. I remember 2 or 3 incidents. I will not name the companies. And in one incident, a person took up a contract of a cement company. And it was a fixed basis contract, as you rightly mentioned, that there was nothing to worry about. I mean, the business was there, everything was there. And after about 2-3 years, he realized that he has made about 10 crores loss.
When I met him, I asked him what was the matter. How did you make losses? I mean, you had a fixed contract and all. He says, I forgot to take the cost of the tires, because the tires are changed after a year. And when you're running in cement and we are running overload, you can imagine, every 8 months you have to change the tires. the wear and tear is And high. the tires wear and tear, he'd actually forgotten. There's a recent example where, due to the reverse auctions, a very big company with 600 vehicles, they kept on bidding very low rates for e-commerce company, and the last contract which they took was at a lower price than the operating cost. The company went bust. So they're committing suicide in a way. They're committing suicide in a way. So you are right that you should actually know your operating cost. Is ITHWA planning to kind of create awareness or educate not just its members but industry on the whole on what the operating cost of a particular model of truck would be? We have already circulated the operating cost model to our members, and we keep on having seminars on that. So we are trying to educate people that this is your actual cost. In fact, I was surprised, pardon my ignorance, but the toll charges. I had a certain figure in my mind, and I used to calculate it when I used to do it in my this thing at a particular rate. Just about 6 months back, I just wanted to recheck the costing once again, and I was surprised that the toll charges for a trailer segment has gone up to 10 rupees per kilometer, which I was under the impression is about 5-6 rupees. And imagine a 4 rupees toll increase over a period over a distance of 2,000 kilometers. Yeah, it's a huge Is amount. 8,000 rupees. Correct. So people are not even aware about the toll, which is slowly going up to the level that earlier it was considered 5.5-6 rupees. It has gone up to 10 rupees now. It is 10. So the education has to be constant every 3 months or 6 months. For example, AdBlue. Earlier the cost was about 1 rupee a kilometer. Now it's about 1.5, and the rates keep on increasing. So people are not fully aware about the actual costs. So Ashokji, to summarize, would it be fair to say that what you're asking from the GST or what you would expect is 18% with 5% GST billed to the client and no input credit? So we have given 18% with 5% GST, either FCM or RCM. Okay. This is a proposal which ITHWA has proposed to the government. Okay. But a single taxation structure. But FCM, RCM again will be the both. I mean, we'll So have two FCM, systems. we have given FCM for ancillary services. Okay. So for traveling or insurance or the other services which are required in the trade. So Right. there you can take input credit. And what is your sense? Where do you think the council would settle on? Any guesses? When I spoke to the officials, I have been told that two major big companies, which are doing a turnover of 3,000, 4,000 crores, listed companies, even they have moved out from FCM to RCM. So that speaks for itself. And also a lot of people are shifting from FCM to RCM. But these two I'm not naming now because, the officers have told me that a lot of companies have started switching from FCM to RCM. So RCM would be the ideal. RCM would be way the ideal. forward. RCM would be the ideal way forward. We will continue our episode on GST after this very short break. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, real people, real emotions, powered by Safexpress. आज इस ट्रक पे एक किसान की जमा पूंजी जा रही है। एक दुकानदार की तरक्की भी है, एक मां की ममता भी है। आज इस ट्रक में सिर्फ गेहूं चावल नहीं, एक बेटी की ताकत भी सफर कर रही है, और उनके संग एक ड्राइवर की मेहनत भी है। क्योंकि इस ट्रक में सिर्फ अनाज नहीं, इस देश के कई लोगों के अरमान और सपने भी चलते हैं।
उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Safexpress. Here is our special episode on GST, trying to see what the industry is expecting from the GST Council. We are talking now to GR Shanmugappa, Chairman AMTC, and seeing what he expects, especially for the truckers, in the new GST regime. क्योंकि कुछ साल से अभी जीएसटी का जो मुद्दा है, एफसीएम, आरसीएम, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अभी गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे रहा है कि आप एक सिस्टम में आ जाओ। एज अ ट्रांसपोर्टर आपका ओपिनियन क्या है, हमको क्या करना चाहिए? और एज एएमटीसी पार्ट 2, एज एएमटीसी आपका स्टैंड क्या रहेगा? हम लोग को अभी डिग्री में 2019 से एंटायर कंट्री में जीएसटी लागू होने के टाइम में हमारे पास डिस्कशन किया जीएसटी काउंसिल लिमिट कैसे रेबल साफ संबंधी जाते डिस्कशन खत्म था उसका पास करके एक सोल्यूशन लेकर आना तक कोशिश किया। रेलवे में कैसा है, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, दिल्ली में हमारा निवेदन था सब था। बाद में क्या हो या माल नहीं तोड़ा नहीं रहा, सरकार को बात किया ARCM ऐसा ये सिस्टम प्लान करने बिगिन में 6 महीना सरकार कुछ भी नहीं किया, ये भी जी याद रखना। बाद में FCM RCM ऐसा करके तोड़ा रहा हुआ है। हम लोग का अभी जस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ड्रीम है मेक इन इंडिया, उसमें लागू करके ऐसा हमारा लोग को 18% में निकाली हो तो बहुत बड़ा खुशी है। हम लोग अभी चैसी का रेट कम हो जाएगा, डीजल एंड ये 65% हमारा खर्चा उसमें है। मेहरबानी करते सरकार वो भी थिंक करके उसमें डीजल में जीएसटी लेकर के तो बहुत बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। आपका ड्रीम में लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगा, आपको आगे मेजर लॉजिस्टिक कम होने का चांसेस है लाल भैया। अभी 80% करने के बाद हमको टायर में बहुत बे एयर ब्लो ये वगैरह सब थोड़ा कम हो गया। हमारा सरकार का निवेदन क्या है, एसोसिएट कमिटमेंट है एयर ब्लो। आप लोग का एनवायरमेंट के लिए आप बनाया एयर ब्लो बनाया, इसके लिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। बाद में इंश्योरेंस ऊपर जीएसटी टैप पर इंश्योरेंस तो क्यों हमको सामने नहीं आने फ्री, वो भी कर लिया तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगा, फ्री मूवमेंट रहेगा, छोटा तक बचेगा। गुरु जी जो सिस्टम है उसके हिसाब से जीएसटी फ्री सर्विस तो कोई है ही। अगर सर्विस है उस पर जीएसटी लगेगा ही लगेगा, वो आपका चाहे एडेबल हो इंश्योरेंस हो वो एक अलग चीज है। लेकिन एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम हमको अभी हमारा डिमांड क्या है, हमको 18% में विदाउट इनपुट क्रेडिट चाहिए या हमको 28% विद इनपुट क्रेडिट या दोनों होना चाहिए? 18% FCM 5% RCM। तो अभी भी ये दो सिस्टम ऐसा वही सिस्टम में हम लोग मंजूर करता है, नहीं तो पुराना सिस्टम में स्टेटस को मेंटेन करना दो। हम अभी जस्ट बताया था ये एनवायरमेंट का एड ब्लो टायर मेजर सिंगल ऑपरेटर उसमें लाइफ है, इसमें करनी चाहिए। लेकिन एक इंडस्ट्री का पोर्शन है वो कह रहा है कि जो बड़ा ट्रांसपोर्टर है जो एफसीएम में है उसको 28% जो इनपुट क्रेडिट मिलता है वो कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। ये बहुत बड़ा गलत बात है। अभी थोड़ा आदमी थोड़ा ऑपरेटर सब नहीं है, ये लोग अर्जेंटली परचेस करके एफसीएम में मेजर पैसा मिल जाएगा करके ये लोग भाग के लेके परचेस किया। एक ही सब बोलता है हमें दूसरा इसके ऊपर भी हमें गलत बोलता है, मगर ये लोग एफसीएम जाने को टाइम में एंजॉय कर दिया,
अभी व्यापार क्या हो गया मालूम नहीं, पेमेंट का सिस्टम क्या मालूम नहीं हमको। अभी ये लोग क्या कर दिया, 3 साल होने के बाद अभी सेल करने के लिए गाड़ी सेल करने नहीं दिया। ये ओनली 6-7% आदमी है, ये लोग हमको FCM जरूरत नहीं है, RCM NF है, FCM क्यों होना, ऐसा कर कभी बोलने का जरूरत क्या पड़ता है। ये ट्रकर स्मार्ट ट्रकर मर जाएगा। अभी हम लोग इन्वॉल्व हो रहा है थोड़ा 1-2% अभी एजुकेट होने के बाद, 3 साल एजुकेट होने के बाद ये लोग अभी गाड़ी बनने के बाद गाड़ी से तरह 4 लाख की गाड़ी का भरना पड़ेगा पैसा। ये थोड़ा आदमी के लिए पूरा देश का ऐसा करने का हमको अच्छा नहीं लगता है। हम लोग बहुत विरोध करता है, किसी चीज में भी विरोध कर रहा है। इन ट्रकर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ट्रकर का सेफ्टी हो, ट्रकर को कुछ फायदा मिले, कुछ बिजनेस 100% मिलेगा। वो सिस्टम क्या होना चाहिए? वो सिस्टम हमको क्या बोल रहा है, अभी हम लोग अभी एंट्री होने का लगा, अभी एंट्री हो रहा है। हम लोग अभी 4 गाड़ी 5 गाड़ी देने का लोग अभी एंट्री होके अभी FCM में आने के लिए कोशिश करता है। ये अभी थोड़ा बेनिफिट लेके हम लोग का एवरी महीना ये खर्चा कम होएगा, इसमें थोड़ा कुछ मिलता है क्या, ऐसा करके यही में हम लोग जा रहा है। अभी किसी चीज में पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट नॉर्थ में सब आदमी मेजर आदमी एंटायर ट्रकर इन इंडिया 96% सब आदमी FCM बना कर पुल डिसीजन ले लिया। थोड़ा अभी FCM में आने के लिए हम लोग को जिस तरह है, ये टाइम में आके थोड़ा आदमी लोग ये सिस्टम बना के ये हमको जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता, ट्रकर को पीछे मारने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। किसी चीज में हम लोग मानने वाला नहीं। आल ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अनसिप्टा वेरी विग्रेसली हम लोग रियलिस्ट करेगा इसको। आप FCM में हो क्या RCM में हो? थोड़ा मिल रहा है अभी महीना देखो, अभी कम से कम अभी 28% मिलने के बाद 5 लाख 6 लाख मिलने के बाद महीना हम लोग किसी चीज में 15,000, अभी 40,000 50,000 ड्यू बना रहे हो तो 15,000 तो हम लोग इसमें GST में मिल रहा है, लाभ ले में मिल रहा है। थोड़ा आदमी ज्यादा ट्रक ले लिया, अभी सेल करने के लिए जा रहा है, अभी व्यापार करने के लिए डेवलप करने की कोशिश करके ले लो ना गाड़ी, उसको अभी गाड़ी लेना पड़ेगा वो कंपलसरी, ऐसा हो गया। थोड़ा आदमी के लिए हम लोग हमारा गल्ला लेके जाके उसका काटने का नहीं छोड़ेगा हमें। हम तो सिस्टम एक ही है, स्टेटस को मेंटेन करो। मेरे तो अभी 80% FCM 5% RCM, हम लोग हैप्पी है। साथ ही साथ इंश्योरेंस में, ऑयल में, एयर ग्रो में कम करके हम लोग बेनिफिट मिल जाएगा। ये ट्रकर का भी बेनिफिट है, ट्रांसपोर्ट को भी बेनिफिट है, सरकार को भी बेनिफिट है। मुझे आपने एक बात कही थी कि ट्रकर्स को आप ट्राई कर रहे हो कि ट्रकर्स भी STM में आ जाए। सिमटा के लोग मेंबर्स है, ट्रक ऑपरेटर्स है, छोटे छोटे बहुत है, 3 ट्रक 4 ट्रक 5 ट्रक भाई, क्या उनको एजुकेट करने के लिए आप कोई सिस्टम बना रहे हो? बहुत एजुकेशन करने के लिए सिस्टम बना लिया। कोई भी ट्रांसपोर्टर, कोई भी एजेंट FCM में आता है वो हमको पास ऑन करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम हम लोग करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली। किसी बेनिफिट क्या, हमको ड्राइवर था, किलर था, वार हो गया, कल ट्रांसपोर्ट नहीं होना, हम लोग फ्लीट ऑपरेटर नहीं बनना। ये देश में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ड्राइवर ट्रेलर और अरे हम लोग 100 गाड़ी चलता नहीं अभी, इसके लिए हम लोग छोटा गाड़ी मोटा गाड़ी को हम लोग बचा रहे हो तो हम लोग GST में इन लोन से थोड़ा डेवलप करके जाना पड़ेगा। आपको सिस्टम भरी करना पड़ेगा। अभी FCM में आप दे रहा है, FCM में पार्टी थोड़ा है, वो लोग पास ऑन करना दो ना, ट्रांसपोर्ट हमको पास ऑन करना पड़ेगा। FCM में हम गया तो HCM में लोड लिया तो हमको पास ऑन कर दो। आपको दिक्कत क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता है। बड़ा ट्रांसपोर्ट है, FCM में बुक करता है, ठीक है, आपका पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, वो टाइम में वो FCM पास ऑन कर को। वो सिस्टम है कि वो सिस्टम बनाना पड़ेगा? सिस्टम है, थोड़ा जगह में सिस्टम बनाना पड़ेगा। सरकार बना दिए तो पूरा ही सिस्टम अच्छा हो जाएगा। सिस्टम इंप्लीमेंट किया तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होएगा, ट्रक भी बचेगा, नेशनल डेवलपमेंट भी है, मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉफिट सरकार को मिलेगा। That was GR Shanmugappa, Chairman AIMTC, who's clearly batting for the truckers. Coming up next is Suresh Khosla, President Bombay Goods Transport Association. Suresh owns 400 plus trucks and he's registered under RCM as well as FCM, depending on what client he's catering to. So let's hear from Suresh what exactly does he expect
from the GST Council and what he thinks will fit best for the road transport industry. Here's Suresh Khosla. Suresh, tell me, currently your company is in FCM or RCM? Girish, first of all, I'm thankful to you for getting my inputs on the GST subject. Today, we are under 80% I am operating under RCM and 20% I am into FCM, forward charge mechanism. So, what was the reason for being in both the formats? See, I think so. GST was introduced in 2017. So almost 7 to 8 years have passed down, and I have stepped into FCM. This is almost 4 years, because the difference between RCM and FCM, there has to be certain parameters as a transporter before getting into FCM has to be looked into it. First is with respect to the payment. How is your payment cycle? Because if you see in the market today, the payment cycle is for 90 days, 120 days. There are certain companies which are paying within 30 days also. For me, getting into FCM was that I have seen that for which company I am operating, number one. So, you have to pay your GST in the following month, right? Yes. Okay. GST has to be paid on or before the 20th. Right. Right. So in that case, we have to work out first, how is my payment cycle for which party I am working on. Right. If the party is a timely making the payments within 30 days, so I think so in that case it becomes viable to operate under forward charge mechanism. If payment I am getting after 90 days or 120 days, so I can enjoy the credit for a certain period of 1.5 years till I am having a sufficient input credit balance in my account. Once the input credit balance gets diminishing after a period of 1.5 years, so then if I am billing with 12% to the party, so that 12%, then I have to shell out from my pocket if my payment cycle is not particular. So this is the main reason I have been very particular getting into the FCM, and today also I am operating only 20% into FCM, and let us see how I can improve more, because 80% is in RCM. But tell me, a lot of transport companies, do you think they fall into the trap where, let's say they finish off their input credit, now to keep the cycle rolling, they end up buying more trucks? Is that happening currently? See, today, yes, definitely I feel there has been, I will not name anybody. Yes, we can see there are an n number of transporters who have purchased tremendous vehicles in the past several years, and then they have been facing the problem for the input credit, the payment cycle, and not getting the benefit for which we are into. We are into the business of transportation, and from transportation we have to run our bread, we have to earn our bread and butter, we have to, यही हमारी रोजी रोटी है. अगर मैं एक इनपुट क्रेडिट के लालच में अगर मैं धंधा कर रहा हूँ, so I am not doing business. That's not business at all. It is not a transportation business. Right. So then I will end up in somewhere else, which is a wrong practice. Vicious circle, actually. Yeah, which is a wrong practice. Now, Suresh, what we are hearing now is that the government is planning two slabs, 5 and 18%. Most likely, from what we feel, is that trucks will probably end up in 18%. But do you think there is a chance that trucks might end up in the 40% slab also? See, I think so. We should be very thankful to our Prime Minister, Narendra Modi ji, when he announced on 15th August that there is a Diwali Dhamaka with respect to the new GST regime coming up. So it was a very happy moment when I also heard and when I saw. And yes, we can see that 18% and 40% what you have asked. As on date, we are into 28%, which is a luxurious item slab. But we are not under the luxurious category. We are here to earn our bread and butter. And if the government comes up with the 18%, yes, there will be a benefit, because today the small operators 80 to 85%, they are under RCM, and
when the government reduces from 28 to 18%, whatever the input cost with respect to the purchase of chassis, tires, in both it is 28%. If we talk about the remolding tires, it is another 18%. Insurance, there are 12% and 18%. And AdBlue also, it is 80%. So there will be a benefit. There will be a benefit. But what, as a transporter, what we can submit to the government is, if you are reducing from 28 to 18%, the other components which are essential, like remolding on tires, AdBlues, spares, that it has to be under the exempted or a minimum of 5%. Because what I have heard, that a person traveling in a business class, initially it was 12%. And now they are proposing it to reduce to 5%. So why not for us? A person traveling in business class, जो आज की तारीख में 12% भर रहा है, उसको प्रपोज सरकार कर रही है कि 5% में ले आएंगे. तो हमारा तो ये 5% में आना चाहिए ना. Whether it is AdBlue, whether it is remolding, whether it is spare parts, and insurance. Yes, insurance also we are hearing that it will be either nil or it will be 5%. So I think so that benefit also we can encash upon it. And आप अगर देखें तो trucks actually are used for nation building. We are serving the nation, we are serving the economy. So we should ideally be in the minimum slab. 100%. See, today everyone is saying we are the backbone of the economy. We are talking about Viksit Bharat 2047. We are talking about PM Gati Shakti Yojana. We are talking about the National Logistics Policy, wherein it is in 2 digits. And in the coming years also, our Honorable Minister Nitin Gadkari ji is very keen that it will be under single digit. तो सिंगल डिजिट कैसे होगा जब आप जीएसटी का स्लैब जो 18% कर रहे हैं? इट इज़ वेरी गुड, बट उसके अदर एसेसरीज है, एडब्लू है, आपका रिमोल्डिंग है, आपका स्पेयर पार्ट्स है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एएमसी ऑन द व्हीकल्स. सो दैट हैज़ टू बी ड्रास्टिकली reduced or exempted. Right. Yeah. But Suresh, there is also a talk in the industry that RCM FCM को हटा के there should be one uniform model. Now, one, are you in favor of a uniform model? And two, अगर uniform model हम देखें तो उसका ढांचा क्या होना चाहिए? Should it be 18% with ITC or without ITC? What should be the way forward ideally? See, as a overall industry का अगर मैं बात करूँ, overall industry, so maximum is small operators. And if we cater the small operators, so I think so the interest gets safeguard for everybody. अगर 18% सरकार करती है तो डेफिनेटली एक तो अपना जो इसमें जो कॉस्टिंग है वो अपना एक ट्रकर की कम हो जाती है. Right. साथ ही साथ दैट इफ यूनिफॉर्म वी गेट अ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म विद 5%, जो बीच में चर्चा भी चल रही थी कि अगर सरकार 28 से 18 करती है गाड़ियों में, एंड देन 5% इज एक्सेप्टेबल टू अस. 5% with RCM, or it can be 5% with input credit as per your business requirement. Okay. What does BGTA stand on this? See, Bombay Goods Transport Association का अगर मैं बात करूँ, we had a meeting, and after that we had a meeting with our apex body also, All India Motor Transport Congress, wherein we were very keen. The members were of the opinion that yes, it should be 5% with input credit as well as 5% RCM, subject to reduction from 28 to 18%. And we are also on the same stand कि अगर हमारा 18% के स्लैब में आ जाता है, and then we are happy with 5% RCM FCM with or without input credit. I think सारे points cover हो गए, कुछ रह तो नहीं है ना? Any other point you can think of? I think we've covered everything, right? Yeah. Okay. In case the government says, ITHA has been saying that fleet owners are ready to give up their input credit and they are okay to go with 18%, no ITC. As a fleet owner, do you think this is taking something away from you, a benefit that you have? See, I have quoted initially also, हम इधर अपना एक ब्रेड बटर अर्न करने के लिए बैठे हैं.
if I think about the input credit, so then I will land up in a vicious circle where I will be only in the circle. I will be rotating and I'll land up never anywhere. So not catering See- to the see- ITC, but just as a, I mean, there is a small benefit somewhere for you in it. सी येस डेफिनेटली येस. आज अगर मैं 20% FCM में काम कर रहा हूँ बिकॉज माई पेमेंट साइकिल, आई नो द पेमेंट साइकिल इज 100% कॉन्क्रीट जिसको मैं कैटर कर रहा हूँ. अगर if the payment cycle is above 90 or 120 days, so then I'll end up, my working capital gets affected. So in that case, I'm not doing the proper business. Then I'm happy in RCM ना, मैं FCM में क्यों जाऊँ. बट अगर लोगों की बात करें, आई थिंक सो ओनली उन्होंने गाड़ियाँ भी खरीद ली इनपुट क्रेडिट के चक्कर में, एंड उसके बाद में दे वांटेड दैट अपना जो है ओवरऑल बिजनेस, अगर एक गाड़ी वाले का जो काम है वो तो गाड़ी वाला ही करेगा. अगर मैं सप्लायर का काम हूँ, मैं सप्लायर का काम करूँगा. मेरा बुकिंग का काम है तो मैं बुकिंग का काम करूँगा. बट पीपल वर ऑफ द इंटेंशन दैट दे वो गाड़ी वाले का भी काम कर लेंगे, बुकिंग वाले का भी काम ले लेंगे और फिर इधर से वो कर लेंगे. बट आई थिंक सो दे कुडंट मैनेज, बिकॉज आज की तारीख में बिजनेस तो लिमिटेड ही है. बिजनेस तो अपना जो है, अगर गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएगी, इट इज़ ऑल ऑन सप्लाई एंड डिमांड. द फ्रेट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड. इट इज़ नेवर RCM and FCM. Today also in the market, the freight is always on the demand and supply game. Switch, one last question. You know, operating costs have been going up consistently for many years, and the freight rates have obviously gone down. The profit margins have squeezed. Considering this, is there a need to shift away from the supply-demand model and go to a more robust model where you actually get paid for what you spend? Krish, I think so. You're talking it's a very good question. But getting this industry into an organized way, it's very difficult at this moment. Yes, we can try, and it will take time. See, nothing is Of course, it will take impossible. time. Nothing is impossible. So we have to educate. It should be more of education, more of awareness. But will that be a workable option in the long run? Of course. Yes, definitely yes. It will be a workable option, but it's going to take time. Well, friends, that was our interaction with top industry leaders on what they feel would be best for the road transport industry. The takeaway is that the industry would be happy to have trucks under 18%, tires, spare parts, insurance, and other aggregates under 5%. They would be happy charging 5% from the customers. And at the same time, the industry also feels it would be happy if they have the RCM and FCM module where they get 5% input credit on their purchases. But what exactly will happen, what exactly the GST Council will come up with, we'll know in a couple of days and we'll keep you posted. You have been watching our exclusive episode on GST. Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Safexpress. We will be back again with a very interesting interaction. So until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind. As we wrap up this episode, remember every 32 seconds, a Safexpress route is on the move. Whether it's your critical business shipment or personal package, their safest, fastest, and most reliable logistics network is always at work. With 95% plus service reliability and a no questions asked claim settlement policy, your trust is their commitment. Choose Safexpress because when they carry your shipment, it's as safe as sold to Safexpress.